बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाए। ऑनरेबल मेंबर। सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। नो नो, आई डिड नॉट इवन रेफर टू द सीबीआई। एनीवे सर, उनको बढ़ाना है तो स्कोप बढ़ा दीजिए। He is free to do that. Saket. Sir, over 6,900 cases Mr. of Gokhale, corruption please continue. have been registered by the CBI, sir. So over 6,900 cases of corruption, a pending trial, cases registered by the CBI. So over 361 corruption cases have been pending since more than 20 years. I am not yielding, sir. I am not yielding. I am not yielding, sir. I am not yielding. He needs to learn to listen. I am not going to yield. I refuse to yield, sir. 1 second. Under the rules, I am allowed to refuse to yield. I am not going to refuse. I am not going to yield to him, sir. 1 second. He can wait for. Mr. Gokhale, listen to the chair, please. When there is a jurisdictional issue, Honorable Home Minister. मान्यवर, Honorable Home Minister. मैंने, इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर कर यहां नहीं घुस गया हूं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं, इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई है, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। चीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर, हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। आप हाईकोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं, और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है। Honorable member. And I'll appeal to the members. All these things can happen in the reply, Keep this in sir. mind and continue. All this Mr. can happen in the Saket, reply. please. ठीक है सर, I'm going to skip CBI and ED. I just want to make one thing clear, No, sir. no, you made a wrong observation about Darge. I'm skipping it. Not Sir, good. Continue. सर, मेहनत से हम भी आए हैं, वो भी साबरमती जेल में रहे, हम भी साबरमती जेल में रहे। ऑन इंटेलिजेंस ब्यूरो तो आता है सर, Saket, होम मिनिस्ट्री के अंदर, सर, this is not fair at all. This is not fair at all. You need to withdraw. This is as the absolutely leader of not the fair, House sir. says. No, this is And my I time. think- So then I want a full 12 minutes once all over again. No, no. They can say their part. One second. According to the parliamentary practices, he should apologize or it should be expunged. You know what? Apologize for Sir, what? no way. No. For what? For what? For making a submission. For what? Just say something. Ridiculous. We will not apologize. I'm never apologizing to you. माफी मांगे सर, चर्चा करना हमारा हक है सर। Honorable members. सर क्या आप हमें चर्चा नहीं करने देंगे सर? सर ये लोग कितना अनाप शनाप बोलते हैं, हमने कभी बोला है क्या? Would you take your seat now? Take your seat. ये बीजेपी वाले कितना
सर Take कुछ your बोलते हैं seat. डिबेट के टाइम Take पे your तब seat. किसी को नहीं रोका जाता। Take it. Honorable members, one second. Honorable members, please, take your seat. Take your seat. What's wrong with you? Your leader of the house has spoken. Honorable members, for last few days, we have had good healthy discussion. There may be different points of view, and I would strongly urge the honorable member that using that expression which is subjective, judgmental, your dignity will not go down, you need to withdraw. I would delete it. No. One second. If any member of the house says that the other member डर गया है, is something which can neither be overlooked nor countenanced. Each member of the house, in his own right, has his dignity. I will look into everything, but it will increase your stature. It will make healthy debate. You need to withdraw that observation. The observation has been imparted with respect to India's Home Minister. This doesn't give good signal. No one interrupted. I allowed. So I would urge you. Otherwise, there are ways in which we deal with situations, deletion of it or otherwise. And I think he is saying a good suggestion. You need to withdraw that. Personal observations of any nature need to be avoided. I am totally opposed, and I am so happy the debate has been very nice in recent days. We have a Home Minister who has been here right from the beginning, and if there have been interventions, the intervention was jurisdictional. That one second. I think members will speak only after I conclude. So I would urge Saket Gokhale, since the objection is legitimate by leader of the house, it does not find approval of the chair. I do not want a promising member to derail himself, and therefore the personal observation withdraw. Saket. One second. So I stand by what I said, Sir. but I would appreciate you will withdraw. I greatly respect you, sir. I'm Mamta Banerjee soldier. BJP वाले withdraw करेंगे, हम नहीं करेंगे. Let me now come The observation to the NIA is and that's your call, sir. One That's your second. call. I won't withdraw. The observation is deleted, Fair, sir. That's your call. I'm not and withdrawing. it is deleted because I find it not only unparliamentary, not only I find it unjustified, I find it is not well motivated. Please go ahead.